Hello friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. I hope depreciation का कंसेप्ट तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हमें पता है कि depreciation ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो ज्यादा करके बच्चों के सरदर्द बना हुआ रहता है। लोग यानी बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि depreciation चैप्टर यानी मुझे इसे ऑप्शन में ही डालना है, मैं इसे प्रिपेयर करूंगा ही नहीं। लेकिन मान करके चलिए कि ये चैप्टर वाकई में बहुत इजी है। एक बार अगर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है, एक बार ये पर्पस अगर अच्छे से समझ में आ जाता है, what exactly is depreciation, how to calculate depreciation and what are the accounting entries, then believe me ये चैप्टर will be one of your best one। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को और हम किस तरह से अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का सेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, जहां पर हम अ प्रॉब्लम ऑन डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो देखते हैं कितना अच्छा मेथड है ये डेप्रिसिएशन, कितना अच्छा तरीका है इसे सॉल्व करने का। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट अस टेस्ट आवर नॉलेज कि वेदर हमें कोई चीज समझ में आई या नहीं आई। सो लेट्स सी, थिंक एंड से डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन व्हाट। क्या डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर चार्ज होता है या डेप्रिसिएशन करंट असेट पर चार्ज होता है? व्हाट विल बी योर आंसर? कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किस पर चार्ज होता होगा। यस, यू आर राइट, इट इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। हमें पता है कि बिजनेसमैन acquires asset. Now these assets are acquired for increasing the efficiency of business. बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम अपने कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। हम असेट परचेज करते हैं। सर कौन से असेट परचेज करते हैं? हम एयर कंडीशनर परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, वी आर परचेजिंग कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सो मेनी ऑफ दीज असेट्स। एट टू योर नॉलेज ये सभी तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। And with the help of this capital expenditure, we are there to create asset. इस asset को fixed asset कहा जाता है। तो हमें पता है depreciation is charged on these assets which are having long life, a life more than 1 year. That's why the asset which is having life more than 1 year is called as fixed asset. So depreciation is charged on which assets over here? Yes, it is charged on fixed assets. Let's see the next one. Under which, that is under fixed installment method, the depreciation will be calculated on these two values. Among these two values, which are they? Is it original cost or is it scrap value? क्या होता होगा? Yes, you are absolutely right. Under fixed installment method, the depreciation is charged on original value. The reason is that under fixed installment method, हम अपना installment of depreciation we are going to keep fixed, and that's why we require a fixed value. तो क्वेश्चन ये होता है कौन सी फिक्स वैल्यू होती है? क्या बुक वैल्यू फिक्स होती है या परचेज वैल्यू फिक्स होती है? हमें सिंपल सा पता है, जो भी मैंने परचेज किया, जो भी मैंने असेट परचेज किया, जिस वैल्यू पर असेट परचेज किया, all expenses incurred for acquiring those assets will add up the value of asset. So that's why depreciation will be charged on original cost. ठीक है? So remember, scrap value is that value which we are going to resell the asset. यानी वो वैल्यू जिस पर हम अपनी असेट बेच करके रिकवर करते हैं। So the value which is recovered on sale of asset, it is called as scrap value. तो हमें पता है scrap value तो at the end of the year मिलेगी, यानी useful life of the year के बाद मिलेगी, और हमें तो depreciation every year calculate करना है। तो depreciation is calculated basically on original cost. Great. So we understood depreciation के अंदर कुछ important concepts होते हैं, लेकिन before proceeding with the sums, let us recall some important rules of debit and credit, because without understanding these rules of debit and credit, the understanding of sum may become difficult. हमें पता है rules of debit and credit के दो approaches हैं। सर कौन से?
पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। हमें यह भी पता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। हमें पता है अकाउंट्स आर क्लासिफाइड बेसिकली अंडर थ्री हेड्स अंडर traditional approach. So as per a traditional approach, accounts are classified into personal account, real account and nominal account. कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें यह भी पता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। याद कीजिए द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में हम किसी पर्सन से डील करते हैं, यानी हम किसी व्यक्ति से डील करते हैं। आइदर द पर्सन विल बी द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और द गिवर ऑफ द बेनिफिट, एंड दैट्स व्हाई द रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इज लाइक द अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, द asset that we are going to acquire for increasing the efficiency of business. Since it's a real account, we consider the rule for real account as debit what comes in and credit what goes out. Third, we are having nominal account, and nominal account basically deals with services. That means these are the services which we are going to avail or either we are going to provide. So when we are going to avail services, it results into expenses. And since we are availing those services, the services are added in our stock. That's why these expenses should be debited. So debit all expenses and losses while credit all incomes and gains. तो हमें समझ में आया accounts basically are classified into three categories: personal, real and nominal. Rules are debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This is as per modern approach. Now क्या ऐसा कोई दूसरा approach है for understanding the journal entries? Yes, the approach is modern approach, and as per modern approach the rule says about increase or decrease. सर क्या increase होगा और क्या decrease होगा? हमें पता है कि as per modern approach accounts are basically classified into four categories. Sir, which are they? Asset, liabilities, expense and income. ठीक है, इसमें asset and expenses we are going to acquire, services we are going to avail. So when asset comes in or when expenses or services are availed, that increases the stock in business. So that's why here if there is increase in asset or expenses, let's say that there is increase in asset or expenses, then that has to be debited, while decrease in asset or expenses, there is no particular expenses and all which decreases, but still if there is a decrease in the value of asset, then it should be credited, right? Similarly, liabilities and income. So liabilities and income basically they are credited. Now credited means what here? Liabilities are those which we have to repay, which we have to pay back, while income is the one where we have provided services. So when we have to pay something or when we have provided the service, it results into either liability or income. So remember here, simple rule: debit decrease in liability and credit increase in liability. Similarly, for income, if there is a decrease in income, generally it won't take place, but if there is increase in income, yes, it should be credited. So we understood simple rule of modern approach. There is also one more rule associated in modern approach, and the rule is of balance sheet. It says that debit all assets while credit all liabilities. So as per modern approach हमें समझ में आया कि किस तरह से अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं. डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट प्लस और माइनस. जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, सेम उसी तरह से अकाउंटेंसी में हम डेबिट या क्रेडिट लिखते हैं. डेबिट दैट इज इंक्रीज इन स्टॉक, credit means decrease in stock. Anyhow, you understood about the approaches, that is the rules of debit and credit as per modern as well as traditional approach. Now let's understand how to solve the sum. ठीक है, तो सम्स के तरफ फोकस करते हैं.
काफी अच्छा सम एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है. लेट्स सी व्हाट बेसिकली इट वांट्स टू से. In exam, such type of sum will come and we have to solve the sum systematically. जब हम सिस्टम को समझते हैं तब जाकर के ही हम ये समझ पाते हैं कि कैसे वो सिस्टम से काम करना है. एक बार सिस्टम से काम करना जब हम सीख गए तो believe me, success will surely be with us. AVM Cinemators purchases a camera costing rupees 5 lakh on 1st April 2020 from a Sony company in Japan. Consumption tax of rupees 50,000 is levied by the government and rupees 8,000 were spent on its shipping. The residual value of the camera is estimated to be 1,58,000 after 10 years of useful life of the camera. On 1st October 2022, the camera was sold for rupees 4,50,000. They close the books of account on 31st March every year, show camera account and depreciation account for the first 3 years. ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एवीएम सिनेमाटर्स यानी बेसिकली वो इंडिविजुअल होते हैं जो सिनेमा फिल्म बनाते हैं. अब उन्हें पता है कि प्रोफेशनल कैमरा की जरूरत है. हमें ये भी पता है प्रोफेशनल कैमरा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए हमने सोनी कंपनी विच इज देयर इन जापान, वहां से हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर करके वो कैमरा मंगवाया. So let us understand first of all what is the cost of asset. Add to your knowledge, जो भी cost incur होता है in purchase of asset should be added in the cost of asset. So that means as per cost concept, all expenses incurred before the use of asset are added in the cost of asset. तो सबसे पहले हम identify करेंगे what is the cost of asset. AVM Cinemators purchases a camera costing rupees 5 lakh. ठीक है, सो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू. सो कॉस्ट वैल्यू इज फर्स्ट ऑफ ऑल द परचेज प्राइस विच इज 5 लाख. क्या 5 लाख में कैमरा हमारे पास हाथ में आ जाएगा? द आंसर इज नो. सर आपको कंजम्पशन टैक्स पे करना होगा. कंजम्पशन टैक्स बेसिकली इट्स अ टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्टिंग गुड्स. एट टू योर नॉलेज, टेक्नोलॉजी पर देयर इज नो टैक्स इन इंडिया. हम टेक्नोलॉजी जब अक्वायर करते हैं तो जापानीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली दे आर हैविंग कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. देयर इज नो बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी और चार्जेस ऑन दिस कैमरा, बट यस देयर कैन बी अ कंजम्पशन टैक्स. तो यहां पर कंजम्पशन टैक्स लगा 50,000. ऑब्वियसली वी हैव टू पे दैट कंजम्पशन टैक्स. So consumption tax will be added in the cost of asset. Also we have to spend on shipping because कैमरा ऐसे ही उड़ करके तो हमारे पास आएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा? शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे. ठीक है सर, तो शिपिंग चार्जेस विल आल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैमरा. So now the total cost of camera for us will be 5,58,000. ग्रेट, तो हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर असेट कैलकुलेट करेंगे. सर आफ्टर दैट हमको आइडेंटिफाई करना होगा कितने साल हमने यूज किया. तो इफ यू रीड द क्वेश्चन दे से फर्स्ट 3 years. ठीक है, सो फर्स्ट 3 year हमारा ईयर कहां से स्टार्ट होगा? द ईयर इन विच वी आर गोइंग टू अक्वायर द एसेट. सर हमने असेट कब खरीदी? 1st April 2020. So let's understand now. 1st April 2020 is the date on which we have purchased the asset. तो हमारा ईयर भी तो इसी समय स्टार्ट होता है. So year starts on 1st April. It will end on 31st March 2021. Second year will start on 1st April 2021. Say ends on 31st March 22. Third year 1st April 22 to 31st March 23. On 1st April, we are purchasing the asset. So when we are purchasing the asset, हम उसे left side पर लिखेंगे as asset we are getting. So 1st April 2020, we are acquiring the asset for 5,58,000. So this 5,58,000 we will write it here. Then at the end of third year, see here, on 1st October 2022, the camera was sold for 4,50,000. 1st
October 22. So 1st October 22 will come in first year, second year or third year? We are aware 1st October 2022 generally means what? It is obviously it is going to come in the third year. So 1st October 2022 we are selling the asset for 4,50,000. Great. So that means this camera we are going to use it for how many years? 3 years. So which are those 3 years? First year 2021, second year 21-22 and third year 22-23. तो फर्स्ट ईयर इज द ईयर इन विच वी हैव अक्वायर्ड द एसेट. इस एसेट जब हमने अक्वायर करी इस साल में तो कितने महीने हमने यूज किया? सर ऑब्वियसली फ्रॉम अप्रैल टू 31st मार्च देयर आर 12 मंथ्स. Second is the utility year. Check out in utility year how many months have we used the asset? Sir obviously 12 months. And in the third year जरा check कीजिए, we are disposing the asset. So it's a disposal year. In the disposal year we are using the asset for how many months? Sir from 1st April to 1st October there are how many months? April, May, June, July, August, September. Should we consider October? No sir, October we have sold on 1st October, so we will take only 6 months. So that means here we are using asset only for 6 months. So now the most important part starts here is the depreciation. तो आपको कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन. अब सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिकॉज यहां पे तो परसेंटेज दिया ही नहीं है. So when percentage is not given, check out have they given scrap value to us, which is also called as residual value or disposal value. So they have given here the residual value of the camera is estimated to be 1,58,000 after 10 years of useful life. This two information will help us first of all to find out depreciable value. चलिए देखते हैं depreciable value किस तरह से कैलकुलेट होगी और किस तरह से हम depreciation कैलकुलेट करेंगे. The very first thing, cost of camera for us is 5,58,000. Then next is about the scrap value which is 1,58,000. So कैमरा का कॉस्ट 5,58,000, स्क्रैप वैल्यू यानी जब हम कैमरा बेचेंगे तो ये पुराना कैमरा हमें 1,58,000 रुपए देगा यानी दिलवाएगा. तो हमारे लिए डेप्रिशिएबल वैल्यू दैट इज द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू इनकर एज अ लॉस इज कॉस्ट वैल्यू माइनस द स्क्रैप वैल्यू. तो आइडेंटिफाई एंड टेल मी व्हाट विल बी द डेप्रिशिएबल वैल्यू. So 5,58,000 minus 1,58,000. Yes, it's 4 lakh. So 4 lakh is the total loss that you are going to incur if you are using the asset for 10 years. अगर मैं 10 साल ये कैमरा यूज करूंगा तो मुझे 4 लाख रुपए का नुकसान होगा. ओके, तो एक साल का कितना नुकसान होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड. So here depreciation will be depreciable value upon estimated life. Depreciable value is 4 lakh by 10. So 10 से डिवाइड करने पर depreciation आ जाता है 40,000. कितना इजी. So first of all हमें आइडेंटिफाई करना है what's the depreciation value. And after this depreciation हमें पूरा सम कैलकुलेट कर लेना चाहिए. सर क्यों ऐसा कैलकुलेट कर लेना चाहिए? That means when you understand about the entire calculation, then the journal entry and posting will become very easy to you. तो सबसे पहला स्टेप हमने समझा, we have to first of all draw the timeline. हम timeline draw करेंगे. Second one, we are going to find out the depreciation if percentage of depreciation is not given. ठीक है. और तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे depreciation. See students, remember, लाइफ में नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल्स? knowledge or skill? The answer is knowledge and skills basically both are important. दोनों एक तरह से हमारे शोल्डर हैं. सर मतलब जैसे राइट कंधा और लेफ्ट कंधा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जीवन में नॉलेज एंड स्किल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं. जितना इंपॉर्टेंस नॉलेज का है उतना ही स्किल्स का है. तो हमें अपने जीवन में फोकस करना चाहिए कोई ना कोई स्किल अक्वायर करने के लिए.
अगर हमें कंप्यूटर अच्छा लगता हो तो उस कंप्यूटर में महारत हासिल करो। अगर हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो तो क्रिकेट खेलने में महारत हासिल करो। अगर हमें ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो खूब अच्छी ड्राइंग कीजिए। जो हमें अच्छा लगे, जिसमें हमारे स्किल्स इंप्रूव होते हो, जिसमें हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, ऐसा काम हमें करना चाहिए। बिकॉज यही स्किल्स हमें आगे चलकर अर्निंग करने के लिए मदद करेंगे। इसीलिए कहा जाता है बेस्ट लर्निंग रिजल्ट्स इनटू गुड अर्निंग। इसीलिए आज से हमारा फोकस होना चाहिए बेस्ट लर्निंग की तरफ। अच्छा पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है अच्छा बढ़ेंगे और आगे चल के अच्छे बढ़ेंगे। सो यानी जीवन में नॉलेज जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा स्किल्स। इनफैक्ट दोनों ही हमें अक्वायर करने चाहिए। चलिए देखते हैं किस तरह से यहां पर हम स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। सर कौन सी स्किल हमें यहां पर यूज करनी है? हमें यूज करनी है मैथमेटिकल स्किल्स। अब मैथमेटिकल स्किल्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सर कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड हियर। इफ यू ऑब्जर्व, यहां पर एक ही असेट हमने परचेज करी है और एक ही asset we are using it for 3 years and in the third year we are disposing that particular asset। तो पहले हम तीनों साल का depreciation and all sort of calculation related to asset हम कर लेते हैं। So first one we are going to purchase the asset। So purchase date is 1st April 2020। The purchase price of the asset is 5,58,000 and depreciation is charged on this purchase price। Now, throughout the year, we are going to use the asset. At the end of the year, we require two values. One is the depreciation and the other one is balance. So, depreciation, let's say here it is, we have already calculated depreciation is 40,000. So, 40,000 we will subtract it from 5,58,000. So we get 5,18,000 as the written down value. This is the value as on 1st April. Now second year we are going to utilize the asset for 12 months. At the end of the second year, we are again going to charge depreciation. Since the depreciation remains same, which is 4 lakh rupees, we will subtract 40,000 and this 40,000 we will subtract it from 5,18,000. So if I subtract 40,000 from 5,18,000, the written down value is 4,78,000. 4,78,000 is the value as on 1st April. Remember, here we are selling the asset in the last year. So whenever the asset is sold, remember at that time we have to consider three important values. Sir, which are those three important values that we should consider while selling the asset? First one, before selling the asset, we should always charge depreciation. Second thing, we should identify the sale value, that is sale proceed. And third one, we should check whether there is profit or loss on sale of asset. So here in this case, we are using asset for 6 months. 40,000 is the depreciation for full year. That is 12 months. So 12 months ka 40,000, so 6 months ka it is 20. So here the depreciation amount will be 20,000. So now the book value of the asset which we are selling is 4,58,000. Zara check कीजिए 4,58,000 की asset we sold it at 4,50,000. 4,58,000 की asset हमने 4,50,000 में बेची, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? Yes. 4,58,000 minus 4,58,000 is a loss. So there is loss on sale of asset. Great. So since we have completed the calculation, we understood about the mathematical skills that we have used in this calculation. Now the entire sum will become very easy for us. So let's see how are we going to pass journal entry as well as do ledger postings in this particular sum. Now in the first year, that is 1st April 2020 से लेके 21 तक, right? The depreciation amount is 40,000 and the balance amount is 5,18,000. This is the important information that we should consider. Now we are going to prepare machinery, that is our camera account, and the second one is our depreciation account. हमें पता है
कि we are going to take two pages side by side. Left side of page we will take machinery account around 20-25 lines, and on right side depreciation account around 10 lines. So here we have to do the posting of journal entries. हम journal entry के लिए rules of debit and credit का इस्तेमाल करेंगे. So in the first year we have purchased the asset. So when we are purchasing the asset, सोच के बताइए asset आ रही है या जा रही है? Asset आ रही है and cash जा रहा है, right? So asset comes in, that is machinery comes in, and cash goes out. So since machinery is coming in, check out, are we preparing machinery account? Yes. So machinery account is debited or credited? Sir, debited. So debit है, so we will post it on left side, that is debit side. Sir, कैसे लिखेंगे? We'll write the date, we'll write to cash account 5,58,000. Check out, are we preparing cash account? जरा ध्यान से देखिए, कहीं हम कैश अकाउंट बना रहे हैं क्या? नहीं. We assume that we have done the posting in cash account on credit side by machinery. कितना easy. Now, at the end of the year, since we are going to use the asset throughout the year, at the end of the year, we have to charge depreciation. So, this depreciation increases the value of asset or decreases? Yes. The depreciation reduces the value of asset. हमें ये भी पता है कि whenever there is a decrease in the value of asset, asset should be credited. And depreciation, since it's a non-cash expense, we are going to debit all expenses and losses. So entry will be depreciation account debit to machinery. Check out, are we preparing depreciation account? Yes, हम depreciation account बना रहे हैं. तो depreciation is debited or credited? सर depreciation तो debit हो रहा है, तो क्या करेंगे? सर debit side लिखेंगे. So debit side पर तारीख कौन सी लिखेंगे? सर हमें पता है depreciation is charged at the end of the year. So since the end of the year is 31st March, we will write 31st March 2021 and we will write to machinery account 40,000. ठीक है सर. So depreciation is debited and machinery is credited. तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड मींस राइट साइड पर हम लिखेंगे डेट 31st March 2021, विल राइट बाय डेप्रिसिएशन 40,000. कितना इजी. थर्ड एंट्री, दिस डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट to find out true net profit or net loss, and that's why this depreciation has to be transferred to profit and loss account every year. तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हाइल डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड. हमें पता है कोई भी एंट्री ट्रांसफर करने के लिए वी हैव टू गिव ऑपोजिट इफेक्ट. फाइन. सो चेक आउट, आर वी प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बना रहे. वी अज्यूम दैट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर हमने लिखा होगा टू डेप्रिसिएशन 40,000. यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ऑन क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000. इतना इजी. नाउ व्हाट टू डू सर? वी आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो फर्स्ट ईयर हमें चाहिए हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ एसेट. लकीली हमने पहले ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए, मैथमेटिकल स्किल्स के जरिए हमने बैलेंस आइडेंटिफाई कर लिया है. आप चाहे तो ये अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सर कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट, डेबिट साइड इज हेवी और क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड. सो डेबिट साइड 5,58,5,58 दोनों तरफ सेम लिख देंगे तराजू की तरह. नाउ व्हाट आई विल ऐड इन 40,000 टू मेक 5,58? So आंसर इज 5,18,000. या तो माइनस करके फाइंड आउट कर लो, या ऐड करके फाइंड आउट कर लो, या फिर यहां से भी ले सकते हैं. सो डायरेक्टली वी कैन गेट द आंसर 5,18,000 which is the balance, and this balance will transfer it to the next year to balance brought downward. Here automatically depreciation accounts gets tallied. So first year accounting entry is closed. कितना इजी. सी चीजें आसान होती है,
खाली हमें उसे समझना होता है। एक बार ये प्रोसेस समझ गए तो बिलीव मी सभी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, नहीं तो यही चीजें हमें बहुत मुश्किल लगती हैं। Let's see the second year. See, in the second year, we are just using the asset. And since we are using the asset, right, neither we are purchasing nor selling, at the end of the year, we are there to calculate depreciation. So, depreciation amount is same 40,000 and the balance amount is 4,78,000. So, here 2021-22 depreciation is 40 and balance amount is 48. Now here we have to understand the entry. The first entry will be obviously for depreciation. So when you charge depreciation, the journal entry for charging depreciation will be, yes, depreciation to machinery. So depreciation account debit to machinery account. Are we preparing depreciation account? Yes sir. So depreciation में debit side पर हम लिखेंगे 40,000 and machinery is credited. So machinery account के credit side पर we will write by depreciation. इतना easy. And then transfer entry. We have to transfer this depreciation to profit and loss account. Since we are transferring, we are going to give opposite effect. So depreciation is credited while profit and loss is debited. So journal entry is profit and loss to depreciation. Are we preparing profit and loss account? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बना रहे, ठीक है कोई बात नहीं। तो वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द डेट विल बी लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है 31st March 2022। नाउ सर व्हाट टू डू? सेम प्रोसीजर, we are going to close the books of account and find out the balance. So here we are going to find out the balance amount. This we can do it by taking the difference between 5,18,000 and 40,000. So see the difference is 4,78,000 which we can take it from here. So balance amount is 4,78,000 which will transfer it to the next year. कितना आसान है। Now the last year, the year in which we are disposing the asset. So we are disposing the asset. Now before disposing, obviously we are going to tally out the depreciation account. Now the last year in which we are disposing the asset. Whenever assets are disposed of, जब भी हम asset बेचते हैं, हमें 3 values चाहिए. Sir, which are those 3 values? One is depreciation, second is sale proceed, and third is profit or loss. DSP. Sir, ये क्या है? D for depreciation, which is 20,000, sale proceed, which is 4,50,000, and loss here in this case, which is 8,000. So DSL. So let's see how are we going to write the entry for these things. First one, depreciation. Since we are charging depreciation, the entry is depreciation to machinery. So depreciation account में debit side पर will write to machinery. Remember the date is 1st October. And machinery account is credited. So on credit side will write by depreciation 20,000. Depreciation entry is done. We are selling the asset for 4,50,000. जब हम asset बेचेंगे तो asset आएगी या जाएगी? सर जाएगी और कैश आएगा, right? So journal entry simple है. We are getting the cash and we are selling machinery. So cash account debit to machinery account, right? So check out, are we preparing cash account? कहीं पे कैश अकाउंट नहीं सर, कैश अकाउंट तो बोला नहीं है। सो वी अज्यूम दैट इन कैश अकाउंट ऑन डेबिट साइड हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। चेक आउट, आर वी प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट? हाँ सर, मशीनरी अकाउंट दिया है एंड क्रेडिट है, सो क्रेडिट साइड पर विल राइट बाय कैश अकाउंट 4,50,000। थर्ड वन, देयर इज प्रॉफिट और लॉस, सर लॉस, and loss should be debited. Debit all expenses and losses. So loss on sale of machinery is debited and loss is provided or loss is made on asset. So because of loss, the value of asset falls down. That's why machinery is credited. So check out, are we preparing loss on sale of machinery account? सर कहीं loss on sale तो हम बना नहीं रहे,
Let us assume that we have done the posting in loss account on debit side. In machinery account on credit side, we'll write by loss on sale of machinery. Great. So now the entire asset is sold. After selling the asset, we are going to transfer this depreciation to profit and loss account. So now transfer of depreciation here, profit and loss account debit to depreciation. We assume that we have done the posting in profit and loss account on debit side. Now depreciation is credited. So here on credit side in depreciation account, we'll write by profit and loss account, which is 20,000. So now what we are going to do? We are going to tally out the sum. So here 4,78,000, and if we do it here also, it is 4,78,000. Depreciation account, it gets automatically tallied. So dear student, you found how to present the sum on depreciation. I hope the presentation of sum had made you understand the process of solving the sum and presenting the sum. याद रहे, हमें अपने skills पर focus करना है, whether it may be mathematical skill, analytical skill, drawing skills, painting skills या कोई भी skills, right? So ध्यान रहे कि जितना हम skills पर focus करेंगे, हम अपने आप को improve करेंगे. Ensure it that you are practicing the sums regularly, right? In your book, see to it that you are observing our channel. If you have not yet subscribed the channel, channel को subscribe कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं. By the time, take care.